Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के बारे में। पहला जो हमारा फेज था, पहली जो एक्सरसाइज थी, इसमें हमने आपने जो पास्ट में पिछले ईयर्स में जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स स्टडी किए थे उसको हम रिकॉलिंग कर रहे थे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लीनियर ग्राफ के साथ। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर ग्राफ और लीनियर ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। A line graph consists of bits of a line segment joined continuously, and sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called the linear graph. तो लाइन ग्राफ जो है वो कंसिस्ट करता है बिट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट को। इसे कंटिन्यूस ज्वाइन करते हुए समटाइम्स हम इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो हमें कंटिन्यू होल अनब्रोकन लाइन को अचीव करता है। सच ग्राफ इज कॉल्ड द लीनियर ग्राफ। टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट ग्राफ शीट पर लोकेट करने होते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट्स conveniently on the graph sheet. The teacher put the dot on the blackboard. She asked students how they would describe its location. There were several responses. Now look at the figure. देखिए पहले चित्र में एक मैडम है, टीचर है, जिसने एक बोर्ड पर डॉट बनाया है ब्लैक बोर्ड पर एंड सी आस्क द स्टूडेंट्स हाउ दे वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। किस तरह से वो इस लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। पहले स्टूडेंट्स हैं वो कहती है द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड। दूसरी स्टूडेंट्स कहती हैं द डॉट इज नियर द लेफ्ट एंगल एज ऑफ द बोर्ड। तीसरी स्टूडेंट्स कहती हैं द डॉट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। कैन एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट हेल्प फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट? नो, वाई नॉट? थिंक अबाउट। John then gave a suggestion. He measured the distance of the dot from the left edge of the board and said, the dot is 90 centimeter from the left edge of the board. Do you think John's suggestion is really helpful? Show the figure 15.10. A1, A2, A3, A4 are all 90 centimeter away from the left edges. एक और फिगर आपके सामने है। A is 90 centimeter from the left edge and 160 centimeter from the bottom edges. Rekha then came up with the notified statement the dot is 90 centimeter from the left edge and 160 centimeter from the bottom edge. That solved the problem completely. Figure 15.11. The teacher said we describe the position of this dot by writing it as 90 and 160 centimeter. Will be the point 160 90 be the different from the 90 and 160? Think about it. लेकिन इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। The 17th century mathematician named Rene Descartes, it is said, noticed that the movement of the insect near the corner of the ceiling and began to think of the determining the position of the given point in a plane. His system of the fixing a point which with the help of the two measurement vertical and horizontal and came to the known as the Cartesian system in this hour. Now 15.2 the coordinates. Suppose you go to an auditorium and search for your reserve seat. You need to know two numbers, the row number and the seat number, and this is the basic method of the fixing a point in a plane. Observe in figure 15.12
how the point 3 and 4, which is 3 unit from the left edge and 4 unit from the bottom edge, is plotted on the graph sheet. The graph sheet itself is the square grid. We draw the x and y axis conveniently and then fix the required point. 3 is called the x coordinate of the point and 4 is the y coordinate of the point. We say that the coordinates of the point are 3 and 4. So look here, vertical axis is called the y axis and horizontal axis is called the x axis, and when the both the axes intersect each other is called the origin 0 0. Tells how many units to move to the right side, 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है. टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स टू मूव अप, तो ऊपर की तरफ 4 यूनिट्स हमें चलना है. एंड टेल्स हाउ मेनी यूनिट्स टू मूव द राइट साइड, राइट साइड की तरफ 3 यूनिट्स ओरिजिन से चलते हुए ये पॉइंट लोकेट होगा 3 4. यहाँ पर एक दूसरा फिगर है 15.13 जिसमें 3 4 एंड 4 3 को लोकेट किया गया है, देखिए. और एक फिगर आपके सामने 15.14 जिसमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स को दिखाया गया है. एग्जाम्पल नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पर. प्लॉट द पॉइंट 4 3 ऑन द ग्राफ शीट. इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4? Locate the x and y axis. There are actually numbers lines. Start at 0, origin 0 0. Move 4 units to the right and then move 3 units up. You reach at the point 4 3 from the figure 15.3. You can see that the point 3 4 and 4 3 are two different points. Example number 4. Now from the figure 15.14 choose the letter S that indicate the location of the points given below. सबसे पहला है 2 1, दूसरा है 0 5, तीसरा है 2 0. एज राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एफ. सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन था, इसका आंसर है 2 1 इज द पॉइंट ई, इट इज नॉट डी. दूसरा है 0 5 इज द पॉइंट बी. तीसरा है 2 0 इज द पॉइंट जी. चौथा है पॉइंट ए इज 4 5 and f is 5.50. एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, एक एग्जाम्पल नंबर 5. प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे lie on a line. If they lie on a line, name it. 1 0 2 0 5 0 6 and 0 3.5. दूसरा है A11 B12 C13 and D14. तीसरा है K13 L23 M33 and N43. और चौथा है W26 X35 Y53 and Z62. तो पहला सॉल्यूशन 02 05 06 और 03.5 के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा. दिस लाइन्स ऑन अ लाइन, द लाइन इज द वाई एक्सिस. दूसरा जो ग्राफ है A11 B12 C13 एंड D14, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड फिगर के साथ. दिस लाई ऑन अ लाइन, द लाइन इज AD. यू मे ऑल्सो यूज अदर वेज ऑफ नेमिंग इट. इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. नाउ फिगर नंबर 3. K13 L23 M33 and N43. This lie on a line, we can name it as KL or KM or MN, etc. It is parallel to x-axis. And last one, W26 X35 Y53 and Z62. This lie on a line, we can name it is XY or WY or YZ, etc. Note that in each of the above cases, graph obtained by joining the plotted point is a line, and such a graph is called the linear graph. Now it's a time for our exercise. लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम आपके साथ सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 15.2 को. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.